स्टार्ट करेंगे अभी, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रंट प्लेन, स्केच नॉर्मल। ओके, ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वन टेपर, अगेन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। Okay, the next option is 3-point arcs. Okay, okay. Let's define smart dimension. Total length 40 mm. This length 28 mm. Okay, and here to here 8 mm. Height 5 mm. And this diameter radius is radius 10. Here 2 mm. Okay. We need one jumper here. That's 0.5. And flat one here. This one 60 mm radius. Okay. This length is 2 mm. Now our sketch is fully defined. देखो पूरा डिफाइन हो गया sketch. Future revolve boss base. Select revolve boss base. Select center line. Okay. Now select right plane. Sketch normal. Again. One draw. Select one center rectangle. Okay. One more center rectangle. Select this one, and this one. Make it equal. इस चारों को इक्वल कर दिया और राइट और इस चारों को इक्वल करेंगे. ये चार लाइन इक्वल. Okay, now let's define the
the distance is 6 mm. Okay, smart dimension, and this distance is 1 mm. Now our sketch is fully defined. Now trim it inside. Select flat, limit it, no, 0.5. Okay, this one, okay, 0.5. The sketch बन गया हमारा इधर राइट प्लेन पे. Now future extruded cut, just reverse direction. The depth is 3 mm. Taper degree, ड्राफ्ट टेपर करेंगे इसको हम 8 डिग्री पर. सी इनसाइड दिस वन, हमारे को 8 चाहिए, एज द रिक्वायरमेंट. ओके राइट. रेफरेंस प्लेन, एक प्लेन बनाना है हमारे को इधर. ओके प्लेन select this face. Here distance is 2 mm is enough. Okay, right. And select this plane, sketch, make it one circle. Okay, just define it 4 mm. Okay, exit, curves. Here helix and spiral. See this one ready. अब इसको वैल्यूज ऐड करना है हमारे को. अभी हम इसमें ऐड करेंगे वैल्यूज. वेरिएबल पिच सेलेक्ट, थ्री mm, 0 0, this one 3, here 5.5. ये स्टैंडर्ड टेबल रहेगा, उसके हिसाब से इसकी वैल्यूज है. 16.5. This is for the third one. Three. Six. Again 3. 7. Again, sorry, here 3. 3. 8. 3. 9. 3. 10. 3. 11. ओके, ये देखो इधर तक हमारा हेलिक्स बन गया. जस्ट एडिट. ये पिच है 3 mm पिच. दिस वन रिवॉल्यूशन, दिस वन हाइट. इधर हमारे को एडिट करना है.
0, 16, 18, 21, 24, 27, 30. Okay, here is okay. Just edit here. 4. Here 3 point. Here 3.8. Here 3.3. Here 2.6. Here 1.8. And here 0.5. हाँ now see. अभी देखो clockwise direction, variable pitch. Okay, इतना हो गया. अभी हमारा next select the front plane, sketch normal. इधर हमारे को एक sketch draw करना है. ओके, इसको डिफाइन करेंगे अभी. तो 1 mm दिस पॉइंट, ए पॉइंट को, और इसका सेंटर पॉइंट किधर है? हाँ, इधर है, वर्टिकल. ओके, देन select this line and this line, make it equal. ओके, इक्वल हो गया. डिफाइन करो, इसका लेंथ होगा 1.5 mm. इधर से इधर तक 2 mm. Exit future sweep bow space. Select this sketch and path. This one, select this. Okay. इसको हाइड कर दो. See how it's look our sketch, very beautiful. So one more thing, this corner, select flat, select this edge, this one 5 mm. This one 2 mm. Okay. Just edit it to 1 mm. 1 mm is enough here. Okay. Appearance, material, and this one. Okay. देखो इसको कैसा ग्राफिक्स देख लो, कैसा ही ग्राफिक्स.